चलिए, so बच्चों, if you remember in the last class we were talking about moles, और moles के बारे में काफी हद तक information आप लोगों के पास है और उसी को आज हम proceed करेंगे बच्चों. Right, I told you that we have multiple formulae of moles and we have discussed right now two formulae of moles. We know that moles you can find out if you have mass. अगर आपको mass given हो, so you can find out moles by dividing MR of the specific substance, right? And it is constant. You can find it out through the periodic table, right? Then secondly, you know that bacho, we have one more formula for moles, and it is especially concerned with gases only. If you have volume in decimeter cube, so you can divide it by 24. This is also constant. You can divide it by 24 and you will get the number of moles of any gas at room temperature and pressure. Or if you have volume in centimeter cube, so we know that 1 decimeter cube have 1000 centimeter cubes, so you can even divide it by 24,000 to get the number of moles, right? So you discussed right now these two formulae in the previous 2 or 3 classes, right? And उसके बाद फिर हमने step 2 देखा कि इन दोनों को connect करके देखा. इन दोनों को connect भी हम कर चुके थे, कैसे के कर चुके थे. For example, mass दिया हो आपको, आपने mass से क्या निकाले, moles निकाले, और moles से फिर आपने volume निकाल लिया था decimeter cube में या सेंटीमीटर क्यूब में. और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मोल्स दे दूं, सो यू कैन फाइंड आउट मास फ्रॉम दिस फार्मूला एज वेल. आप मोल्स को एमआर से मल्टीप्लाई कराते हो, मास आ जाता है. सेम एज इट इज, अगर मैं आपको मोल्स दे दूं, तो यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब और इन सेंटीमीटर क्यूब बाय मल्टीप्लाइंग 24 और 24,000 विद द नंबर ऑफ मोल्स. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको दे दूं वॉल्यूम in decimeter cube या centimeter cube, so you can convert this into moles again and you can even find out the mass as well. So you can backward and forward conditions भी आपको आ गए हैं. You can do this, right बच्चों? Is that right or not? Yes sir. Then I told you 3-step reaction or 3-step process, और first step में मैंने आपको बताया था आप moles निकाल सकते हो. second में आपको relation लगाना सिखाया मैंने, ठीक है. एंड थर्ड में you can find out the variable whatever they are asked for, right? You can find out in this way as well. और इस तरह करोगे तो फायदे में रहोगे, आपसे गलती के चांसेस कम होंगे, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो आप इस तरह भी कर सकते हो. बट अब तक हमने सिर्फ इन 2 फॉर्मूलाए के ही बारे में बात की थी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला नंबर 3, और इसको फिर हम कनेक्ट करेंगे इन दोनों फॉर्मूलाए से, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला नंबर 3. You can even find out the number of moles. You can even find out the number of moles by multiplying concentration with volume, right? In decimeter cube. Now, what is concentration? Concentration is something number of moles divided by decimeter cube volume. For example, if you have 1 decimeter cube solution, right? You have 1 decimeter cube solution and you have 2 moles of NaOH in this. So you can say that this is a solution which is 1 decimeter cube, the volume is 1 decimeter cube. So the concentration of this volume is 2 moles per decimeter cube NaOH, right? So this is actually concentration, means how many number of moles are dissolved in per decimeter cube solution, right? So you can see this, the unit for this is fixed, which is mole per decimeter cube, but examiner can give you the volume in different units. You know that volume decimeter cube में भी हो सकता है and centimeter cube में भी हो सकता है. but जहां आप लोगों को मिस्टेक होती है ना, जहां आप लोग गलती करते हो, वो क्या होती है? You always mix this volume with the volume of gases. Remember बच्चों, this is the volume of gases. यहाँ concentration की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है ना? और ये वाला जो वॉल्यूम आपके पास ये वाले फॉर्मूले में है ना, ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लिक्विड का वॉल्यूम है, ठीक है ना? तो दिस इज डिफरेंट. जब भी आपको लिक्विड का वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो वहां आपको नंबर ऑफ मोल्स लाजमी दिए हुए होंगे या तो आप कॉन्सेंट्रेशन दी होगी. सिर्फ वॉल्यूम देके मोल्स निकलवाएंगे आपसे. यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस इज अ डिफरेंट वॉल्यूम, right? If the volume in decimeter cube, so you can use the formula simply concentration into volume. But if the volume is given in centimeter cube, so remember we need to same the units, right? अब आपको पता है कि concentration का unit तो change होने वाला नहीं है. It is mole per decimeter cube. It will remain same. अब सेंटीमीटर वाले को आपको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. So this will be the formula for
if you have volume in centimeter cube, right? So ज्यादातर पेपर में ये सेंटीमीटर क्यूब वाला ही देते हैं, डेसीमीटर क्यूब वाला बहुत शायद ही कभी आपको नजर आए, सेंटीमीटर क्यूब वाला ज्यादा देंगे ताकि आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़े और यूनिट की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं, ठीक है ना। रिमेंबर बच्चों, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई हो, ठीक है, इफ आई गेव यू कॉन्सेंट्रेशन एंड आई आस्क फॉर द number of moles, so remember concentration into volume divided by 1000 if volume is in centimeter cube, right? Remember this formula. Or if the volume is in decimeter cube, so you don't need to divide it by 1000, you can find out the number of moles directly, right bachcho? Yes sir. Yes sir. Okay, so let's talk about some examples. We precise things, we understand things, we grasp things by examples, right? So for example, if I ask calculate the number of moles, calculate the number of moles in 500 centimeter cube of 1.5 mole per decimeter cube NaOH solution. For example, examiner gave you the 1.5 mole per decimeter cube solution of NaOH and the volume of this concentration is 500. उसने आपको एक बीकर दिया, उस बीकर में आपको कहा कि यार इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है ना 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की बनी हुई है, ठीक है ना, बट उसने आपको जो लिक्विड दिया वो लिक्विड आपको 500 ml दे दिया या 500 सेंटीमीटर क्यूब, आप सबने देखी होगी 500 वाली कोल्ड ड्रिंक ना, उसके बराबर उसने आपको वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है ना। नाउ ही इज आस्किंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस सॉल्यूशन. नाउ इट्स प्रीटी सिंपल फॉर यू, यू नो दैट यू हैव अ फार्मूला. आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, मोल्स, और अगर आपको वॉल्यूम भी गिवन हो और सॉल्यूशन का गिवन हो और कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन हो और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, सो यू नो दैट कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम and volume should be divided by 1000. We can solve this. Concentration is 1.5 and the volume is 500 divided by 1000. So what will be the answer? I think it is 3 moles, right or not? Right, bacho? Sir, isn't it 0.7? Yes sir, 0.75 है sir. 0.75 है, okay, my bad. तो मैं इसको 0.5 पर कितना है, ये हो गया 1.5 into 0.5. Oh right, it is 0.75 moles, right? That's great. It is 0.75 number of moles. Now you know that बच्चों कि जो आपको concentration और volume दिया गया एग्जामिनर की तरफ से, आपने उसमें NaOH के moles निकाल लिए. When you find it out the number of moles of NaOH in that solution, so you can now find out the mass of NaOH as well. अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेना, बताओ जरा बच्चों आपने कितना मास NaOH का डाला होगा तब जाके ये सॉल्यूशन बना होगा. You can say that that's not a big deal for us. We know that we can find out mass from moles. It is moles into MR, and the MR of NaOH is 40. So it is definitely 30 gram. आपने 30 ग्राम NaOH का किया होगा, आपने सॉल्यूशन में मिलाया होगा, उसको जो है 500 बना दिया होगा. 30 ग्राम NaOH को आपने पानी में मिक्स कर उसको 500 ml तक बना लिया, तब जाके आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन बनी होगी. You can see this. अगर एग्जामिनर आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दे दे तो आप मोल भी निकाल सकते हो, और फिर मोल से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, मोल ही से आप मास भी निकाल सकते हो. आप उसको बता सकते हो कि भाई आपने इतना मास इसमें मिलाया था, राइट बच्चों? Yes sir. और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका उल्टा दे दूंगा तो आप वो भी कर सकते हो. आप देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू 2 ग्राम NaOH dissolve in water, 2 gram of NaOH dissolve in water to make 100 centimeter cube of solution. Now I ask for what? I ask for concentration. So you can do this. That's not a big deal for you. You know that, we know that sir, moles is actually mass over MR, right? So mass over MR क्या हो गया भाई, 2 divided by 40. What is the number of moles बच्चों? 0.05.
0.05, right? So you get the number of moles of NaOH in 2 grams. आपने moles निकाल लिए, जब आपने moles निकाल लिए, you can find out the concentration. अब आप बोलेंगे सर concentration का तो हमें पता ही नहीं है. You can use this formula to find out the concentration. देखें, concentration को हमने वैसे ही छोड़ देना है, moles को ऐसे ही छोड़ देना है, concentration को ऐसे ही छोड़ देना है. Volume क्या है? 100 divided by 1000, right? Yes, छोड़ दिया. अब इसमें put कर दें values. Moles कितने हैं आपके पास? 0.05. Concentration is going to be find out by you. Volume आपको examiner ने दिया 100 and it is divided by 1000, right? So what will be the concentration बच्चों? ये हो गया आपके पास 100 divided by 1000. It will give you 0.1. So it will be like this: 0.05 is equals to concentration into 0.1, and we know that 0.1 is going to be multiplied with concentration. So it will go over there and divided by 0.5. So check करें बच्चों, आपके पास आंसर कितना बना? 0.05 divided by 0.1. It is 0.5. Yes, 0.5. this is 0.5. And what is the unit of concentration? It is mole per decimeter cube, right बच्चों? Yes, sir. तो आप देखें कि एग्जामिनर आपको कुछ भी नहीं कर सकता अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपको पता है व्हाट इज कंसंट्रेशन, अगर आपको पता है कि यार ये वॉल्यूम कौन सा वाला है, ये गैस वाला वॉल्यूम है या ये लिक्विड वाला वॉल्यूम है, आपको पता है अगर मास दिया हुआ है तो मुझे कहाँ जाना है. इफ यू हैव द कनेक्शंस, आपके पास सारे कनेक्शंस होंगे, तो एग्जामिनर जितनी कोशिश क्यों ना कर ले, आप परेशान नहीं हो पाएंगे, आप आराम से सॉल्व करेंगे, राइट? बिकॉज आपको मैं इतनी एक्सरसाइज अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सीख सकें. लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8 तक पहुंच गए थे. अब आप देखें एक्सरसाइज 9 और 10 आपके सामने है. अगर आपको मैं दे दूं कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम, आप मोल्स निकाल के मास निकाल सकते हो, और अगर मैं आपको मास दे दूं और वॉल्यूम दे दूं तो आप मोल्स निकाल के कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो. So that is very good for you. You can do anything. You can do anything in number of moles. You can do anything in concentration, whatever given by the examiner. You are not going to be confused in the questions, right, बच्चों? Yes, sir. चलें. Now I am giving you the exercise number 9, और इसमें मैं आपको दे रहा हूँ कुछ concentration and volumes. तो जरा जल्दी से मुझे number of moles calculate करके दिखाइए, जल्दी से. For example, if you have 100 centimeter cube of, इसमें moles निकालेंगे और फिर mass भी निकालेंगे. 100 centimeter cube of 0.05 mole per decimeter cube sodium carbonate. Solution, right? It is solution. Now, if you have 250 centimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube copper sulfate solution, and if you have 700 centimeter cube of 0.25 mole per decimeter cube ethanoic acid, तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन. और एक सवाल और दो सवाल हम डेसीमीटर क्यूब वाले भी कर लेते हैं. यू हैव 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. Sir, we have to find the concentration and mass. Sorry, Sir, for this exercise, we have to find the mass and concentration. the concentration is already given to you, na Shifa? So definitely you are going to find out the mass over here, right? Okay. But for the mass, you definitely need to find out moles first, right? You need to remember why I tell you the unit of concentration. I just tell you the unit of concentration so you can identify what is given to you in the question. So whenever you find mole per decimeter cube, you need to be still that, sir, it is concentration. It is concentration given to us. So आपको पता होना चाहिए देखते ही ना कि this is concentration, right? Okay, बच्चों, just do it quick and send me the answers on the WhatsApp so I can check you are doing right or not. So मैं थोड़ी देर के लिए recording stop कर start कर. Yes, exercise number 10 here. Now in exercise number 10, what you need to do, बच्चों, you need to calculate concentrations now.
if I give you masses of different substances dissolved in different solutions, you are going to find out the concentration of such solutions, right? So for example, if you have 10 gram sodium carbonate dissolved in water to make 500 centimeter cube solution. So what will be the concentration of this solution going to be? Done. Then let me change the salt. For example, we have 150 gram ferrous sulfate, and it is going to be dissolved in 200 centimeter cube of water, right, to make a solution of 200, right? Then we have, for example, 0.75 gram ammonium sulfate, right? And we are going to dissolve it in water to make 150 centimeter cube solution, right? Or the fourth one is, for example, we have 100 gram of aluminum nitrate. We dissolve this in water to make up 2 decimeter cube of solution. Chale, we need to solve these 4 questions as your exercise number 10. So I will check कि आपके ये समझ में आ रहे हैं या नहीं, right? Let's start this.